Okay, so shares just work as a part of a company. So those who own shares are also known as the owner of the company, एंड शेयर होल्डर्स हम उन्हें कहते हैं, लेकिन कंपनी शेयर्स अपने तब मार्केट में लेकर आती है जब उसको लगता है कि उसको थोड़ा और इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़े और पैसे चाहिए अपनी कंपनी रन करने के लिए। तो वो अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है इन ऑर्डर टू जनरेट सम फंड्स। तो जो लोग वो शेयर्स खरीद लेते हैं वो उसके ऑनर हो जाते हैं और उसके बिहाफ पे वो कंपनी को पैसा दे देते हैं। तो कंपनी अपने एज अ वर्किंग कैपिटल उसको जनरेट करके उससे कंपनी को रन करती है फॉर सम टाइम। और इन केस अगर बाद में कंपनी को लगे कि it has generated enough funds and now it has enough capital that it can run in on your own, and the company owner needs more share of the company, then they can buy back. They can place a call and they can buy back shares as well. But again, there are certain policy rules and regulations. So shares are units of equity ownership interest in a corporation that exists as a financial asset, providing for an equal distribution in any residual profits, if any are declared in the form of dividends. And shareholders may also enjoy capital gains if the value of the company rises. So जितनी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और उतना डिविडेंड उनको ज़्यादा मिलेगा। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होता है, टाइप ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड की सूरत में वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को देती है। तो कंपनी डिविडेंड किस तरीके से रिलीज़ करती है, वो पहले अपने जब उसको प्रॉफिट आता है जनरेट होता है वो पहले अपने टैक्सेस पे करती है, वो अपनी यूटिलिटीज़ पे करती है, अपने बिल वगैरह, अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट, अपनी जितना लोन वगैरह, दिस एवरीथिंग व्हेन दे पे ही देन द अमाउंट व्हिच इज़ लेफ्ट दे जनरेट डिविडेंड फ्रॉम इट, और फिर वो शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। For shares, a company's capital is divided into small equal units of a finite number. Each unit is known as a share, and in simple terms, a share is a percentage of ownership in a company or a financial asset. So ये एक financial asset होता है. Investor who holds shares of any company are known as shareholders. So जो investors shares जिनके पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं उस कंपनी में, ठीक है। Then the two types of shares we are going to discuss today, that is equity shares and preference shares. So equity shares क्या है, and equity shares commonly referred to as ordinary shares also represents the form of fractional or part ownership in which a shareholder as a fractional owner undertakes the maximum entrepreneurial risks associated with a business venture. The holders of such shares are members of the company and have voting rights, right? तो इक्विटी को हम एक तरह से कॉमन शेयर, ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। तो ये एक तरह का आम शेयर होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज होती है कंपनी के लिए इक्विटी शेयर जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज शेयर्स आर इशूज टू द जनरल पब्लिक एंड आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। इसको रिडीम नहीं कर सकते कंपनी जो है, और ये जो है एक लॉन्ग टर्म जो है फाइनेंसिंग का सोर्स होता है। Investors in such share holds the right to vote, share profits and claim assets of a company. तो अब जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर्स होते हैं तो एक तरह का ऑर्डिनरी शेयर है। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो इनको लॉस बेयर करना पड़ेगा।
कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है या कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ हो रही हैं, बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पूरा राइट होता है कि ये वोट दें फॉर द सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ठीक है, इस तरह के इनके पास राइट्स होते हैं। समटाइम्स इस तरह के राइट्स जो हैं प्रॉब्लम्स इशू भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव मोर पर्सन हु कैन शो द इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस। सो ये जो है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट्स हैं, राइट। इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, a company may issue such shares with differential rights as to voting, payments of dividend, etc. So वही बात हो गई। अच्छा, इसको हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, कॉमन ऑर्डिनरी स्टॉक, ठीक है। इस तरह से हमें कोई इक्विटी शेयर जो है उसकी जो कॉपी है, सैम्पल कॉपी है, ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। कितना परसेंट आपने उसमें से लिया है कंपनी का, ठीक है, सारी डिटेल्स, पूरा एक सैम्पल है, ठीक है। फ़ायदे क्या क्या हैं इक्विटी शेयर्स के? कंपनी नीड्स नॉट हैव द फोर्स ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं है कि ज़बरदस्ती हर हाल में वो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को दे। अगर उसको लॉस हुआ है तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपनी कि वो ऐसी सूरत में भी डिविडेंड पे करे, राइट। Equity share is a permanent source of funds which facilitate flexibility in usage of funds. इक्विटी शेयर जो है वो हमारे पास एक तरह से परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स है, क्योंकि कंपनी एक बार शेयर कर देती है तो इसकी बायबैक नहीं करती। फिर ये सेकेंडरी मार्केट में फर्दर रोटेट तो होता है लेकिन कंपनी इसको बायबैक नहीं करती। So equity share is a permanent source of funds which facilitate flexibility in usage of funds. Now, the obligation to repay the equity capital arises only at the time of liquidation of the company. So जब जिस टाइम पे कंपनी को डिसॉल्व किया जा रहा होता है, उसकी लिक्विडेशन हो रही होती है, तो तब फिर वो रीपे वाली जो चीज़ है ना, द ऑब्लिगेशंस टू रीपे द इक्विटी कैपिटल, तब उस टाइम पे वो अराइज होती है, उससे पहले नहीं। The shareholders can participate in the management of the company through voting rights. तो शेयर होल्डर्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में होती है थ्रू जो वो है वोटिंग राइट्स जो होते हैं उसके थ्रू उनकी होती है। इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर द एसेट्स। अब इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर द एसेट्स। ऐसा नहीं हो कि उनका एसेट्स के ऊपर ही वो कोई क्लेम कर लें, ठीक है। तो वो आपका विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लेम ऑन द एसेट्स जो इक्विटी शेयर्स किए जा सकते हैं। अब ये तो फ़ायदे हो गए थे, इसके अलावा नुकसानात क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं? डिमेरिट्स में इक्विटी शेयर्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इक्विटी शेयर्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट। सो क्या एक्सपेक्ट करें कि इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करे, इन्वेस्टर ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करे या कम डिविडेंड एक्सपेक्ट करे। इट इज़ प्रैक्टिकली अ डिफ़िकल्ट टास्क टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर। अब ये तो नियरली इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इन्वेस्टर कह रहा है, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो समझ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी कंपनी वर्थ उसको इतना डिविडेंड मिलना है और उसको इतना हर महीने ही मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी किसी एक बार पे, तो
ये चीज़ जो एक्सपेक्टेशंस मीटअप है ये हर बार मेंटेन रखना समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है कंपनी के लिए. Equity shareholders have to bear all the losses at the time of liquidation. अब जिन लोगों ने इक्विटी शेयर लिया हुआ है और कंपनी दिवालिया हो जाती है और लिक्विडेशन हो रही होती है और जितना भी लॉस कंपनी को हुआ था उतना ही लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी बियर करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग. उनको फिर कुछ नहीं मिलता. Interruptions of many persons are involved in the company working, so in some cases it increase delay in decision making. अब इनके पास इन्वॉल्वमेंट का राइट भी होता है, कंपनी में इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं. सो उससे क्या होता है, इंटरप्शन हो जाती है क्रिएट समटाइम्स, और जो मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाते हैं इसकी वजह से. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट ऑफ इक्विटी शेयर. जितने डिसीजन मेकर्स होंगे उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले होने के चार्जेस होते हैं. When the finance has to be raised for less risky projects, then this is not a good source of raising finance. If only equity shares are issued, then the company cannot avail the benefits of trading on equity. Investors who have a desire to invest in safe or fixed returns have no attraction of such shares. So अगर एक कंपनी ने से एक छोटे मोटे किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जनरेट करने, तब तो ये नहीं है कि कंपनी का हिस्सा बेचा और एज अ शेयर्स और इशू किया और उसका वो फुलफिल कर दिया. सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस इन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो. ऑल्सो एक अट्रैक्शन भी क्रिएट करनी होती है शेयर होल्डर्स के लिए बाय ऑफरिंग अ गुड डिविडेंड इन द मार्केट. पे सेकेंड डे मार्केट में वो ट्रेड करते हैं, द प्रोसेस गोज ऑन. सो इट्स वेरी काइंड ऑफ इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हमें शेयर्स की ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते. काइंड ऑफ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू शेयर ट्रेडिंग. अच्छा, फीचर्स क्या हैं इक्विटी शेयर्स के? द फर्स्ट वन इज़ राइट टू इनकम. द सेकेंड वन इज़ राइट टू कंट्रोल. लाइक राइट उनके पास होता है इक्विटी शेयर्स का कि उनकी क्या इनकम जनरेट हो रही है. राइट टू कंट्रोल, काफ़ी इनके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं जिसके थ्रू वो सर्टन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. प्री एम्प्टिव राइट उनके पास होता है, और लिक्विडेशन राइट जो होता है वो उनके पास होता है. ठीक है. राइट्स टू इनकम, इसको हम डिटेल से अब कर लेते हैं. राइट टू इनकम जो है हमारे पास, द इक्विटी इन्वेस्टर्स हैव रेजिजुअल क्लेम टू द इनकम ऑफ कंपनी. वो कंपनी की इनकम के ऊपर क्लेम कर सकते हैं. द इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर्स इन्वेस्टर्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर्स. फिर जो बाकी सारे इन्वेस्टर्स को जो जो क्लेम उनको दे दी जाती है, उसके बाद जो बच जाती है बिलोंग करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की. ठीक है. दिस इनकम इज सिंपली इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड. सो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जितनी भी इनकम जनरेट कर रही है कंपनी, इसमें से हमने जितने टैक्स वगैरह दे दिए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया, उसके बाद जाकर जो हमारे पास पैसा बचता है उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम कर सकती है. The income of equity shareholders may be retained by the firm or paid out as dividend. Retain भी कर सकती है कंपनी, अपने पास रखना चाहे और ना दे, और उसको एज अ डिविडेंड देना चाहे तो वो भी कर सकती है. So equity earnings which are retained in firm tend to increase market value, or equity shares and earnings distributed as dividend provide current income to equity shareholders. Okay. So जो which are retained in firm tends to increase market value of equity shares. वो market value equity share की increase करती है, which amount is being retained और जो distribute कर दी जाती है as dividend
प्रोवाइड्स करंट इनकम इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसमें हम उसकी करंट एज अ करंट इनकम के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया जाता है। सो ये राइट टू इनकम हमारे पास है। राइट टू कंट्रोल में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द फर्म्स, so they can elect the board of directors and have rights to vote on every resolution passed before the company. अब अगर कंपनी कोई रेजोल्यूशन भी पास करती है तो उसमें भी इनके पास पूरा पूरा राइट होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट्स द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ फर्म्स। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वो फर्दर आगे मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है और मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। हैंस इक्विटी शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ फर्म्स। तो एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये एक फर्म के ऑपरेशंस जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है। Okay, now what is preemptive right? Preemptive right enables existing shareholders to maintain their proportional ownership by purchasing their additional equity shares issued by company। ठीक है, तो अगर वो अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, 10% शेयर्स थे उससे वो 20% लेना चाहते हैं, दिस इज द राइट विद देम दैट दे कैन डू इट एनी टाइम। अकॉर्डिंग टू लॉ, existing shareholders have first priority to purchase additional shares। पहली प्रायोरिटी दी जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, whether they want to increase their shares or not, अगर मार्केट में ऑफर किए जाएं, और फिर उसके बाद बाकी लोगों को इसकी they would be able to buy those shares before the other। Okay, if company has unit 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, okay, if company has 10 lakh outstanding shares of equity and proposes to issue 3 lakh additional equity shares, uh, an equity shareholder buying 100 shares has the first right to purchase 30 of 3 lakh new shares before those are offered to anyone else। तो वो उनमें से 30 शेयर्स खरीद सकता है बिफोर कि कोई और उसको खरीदे। ठीक है, इतना उसके पास राइट है। अच्छा, तो इसका राइट भी जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कितने परसेंट ऑलरेडी उस बंदे के पास शेयर्स हैं, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके पास राइट होगा। ये नहीं कि एक बंदे के पास एक शेयर है और उसके पास राइट मिल जाए जी पूरी कंपनी खरीदते। There must be some there must be some options, but all of an instance सबको preference दी जाती है। ठीक है, so right to liquidation। अब liquidation के टाइम पे क्या right है इनके पास? Equity shareholders have a residual claim over the assets of the firm in the events of liquidation। ठीक है, अगर कंपनी लिक्विडाइज हो रही है, दिवालिया हो गई है, उसकी चीज़ें बेची जा रही हैं, तो वो क्लेम कर सकती हैं एसेट्स के ऊपर फर्म की। कुछ कोई मशीनरी है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो बेच कर जो पैसा है वो दिया जाए, इनका क्लेम इस पे हो सकता है। क्लेम ऑफ ऑल अदर्स, डिबेंचर्स holders, secured lenders, unsecured lenders, other credentials, and preference shareholders are prior to the claim of equity shareholders। लेकिन अगेन जो पहले क्लेम कंसिडर किया जाएगा वो उन लोगों का क्लेम कंसिडर किया जाएगा जो कि जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है, जिनके पास डिबेंचर्स हैं, जिनके पास जो सिक्योर्ड लेंडर्स हैं या अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं। ठीक है, सो अदर क्रेडिटर्स के अलावा हो गए, उन सबको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को कंसिडर किया जाएगा, और अगर तब तक कोई पैसा बचा तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के को उसका पैसा दे दिया जाएगा। Okay, now evaluation from the viewpoint of company if we discuss। So advantages, permanent capital हमारे पास
It represents permanent capital, hence there is no liability for repayment. अब कोई liability तो कंपनी पे नहीं होती कि उसने रीपे करना है, so it's kind of a permanent capital. No obligation to pay dividend. डिविडेंड अगर पे नहीं करता तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखती. Equity shares impose no obligation on the company to pay a fixed dividend to the equity shareholders. They get dividend if adequate profits are available. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं है नहीं मिलेगा. And they can't put obligation on a company. No charge on proprietary. The company is able to procure capital without creating charges on its property, which remains free and can be utilized when additional funds are required by the company. So, property के ऊपर कोई charge नहीं होता. The company is able to procure capital without creating charges on its property, which remains free and can be utilized when additional funds are required by the company, right? So इसका कोई charge नहीं है property के ऊपर. Wide scope of marketability. Equity shares are lower denominations, hence they can be purchased by person of limited income also. So there is a wide scope of marketability of equity shares. Equity shares 10 रुपये में भी मिल जाते हैं, 100 रुपये में भी मिल जाते हैं, 1000 रुपये में भी मिल जाते हैं. एक आम बंदा भी इक्विटी शेयर खरीद सकता है. High credit worthiness. The okay, whatever the text is, इसकी वर्जिनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, right? It can be borrowed when it needs additional funds. So um, this is something like it has a high credit worthiness. Okay, so high premium में हमारे पास क्या है कि the company can easily sell equity shares on premium in time of boom. Even in such circumstances, people are most eager to buy equity shares. Hence, company can easily and quickly raise fixed capital through equity shares. जब से ये बूम का टाइम होता है ना कंपनी का, जिस टाइम पे बहुत सक्सेस हासिल कर रही होती है कंपनी, उस टाइम पे भी अगर वो कंपनी जो है शेयर्स एकदम से मार्केट में लाए तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ईगर होते हैं. बड़ी वेल नोन अच्छी कंपनीज जिनमें मुसलसल से गेन ही हो रहा है, तो लोग ऐसी कंपनी में शेयर लेने के लिए ऑल द टाइम दे आर रेडी, ऑलरेडी रेडी देयर एट दैट टाइम. ओके, नाउ इवैल्यूएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंपनी. इसकी अगर हम इवैल्यूएशन की डिस्कस करें, डिसएडवांटेज क्या क्या है कंपनी के व्यू पॉइंट्स पे, डिसएडवांटेजेस क्या है. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Cost of equity is generally highest. The rate of return required by equity shareholder is generally higher than rate of return required by another investor. So cost of equity इसकी क्या है कि it's generally higher, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है. And the rate of return required by equity shareholder is generally higher than the rate of return required by other investors. कोई और, अब जैसे एक बंदे ने एक शेयर होल्ड लिया हुआ है, फिर वो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहेगा, तो उसका यही फोकस होगा कि वो उसको कंपनी की वैल्यू वर्थ इतनी बढ़ चुकी हो, क्या वो सेल आउट करे तो वो थोड़ा हायर अमाउंट में उसको सेल आउट करे. फ्लोटिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स विच इज़ हायर देन कॉस्ट ऑफ इशूइंग other type of securities. Underwriting, commission, brokerage cost, and other issue expenses are higher than equity capital, right? So floating cost ये होती है कि मतलब ये कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स जो है, जो कि ज़्यादा होती है सिक्योरिटीज इशू करने से. अंडरराइटिंग, कमीशंस, ब्रोकेजेस कॉस्ट एंड अदर इश्यूज एक्सपेंसेस, इन सब की इशुएंस से ज़्यादा होती है इक्विटी कैपिटल जो है.
ठीक है. Interference in management. Equity shareholders have voting rights. Hence, there may be interference in existing pattern of management. Yeah, definitely. This is something we have already discussed, that they do have interference in the management activities, uh, and like they do have interference in the ongoing activities of a company, and they do have the right of um, how they need to when their involvement